Okay, good morning everyone. Welcome back to Grad Grade B. मेरा नाम है ऋषभ and let's begin today's class for the revision part 1 March for economics and finance issues and analysis. Okay, finally revision classes are happening. Okay, Bruce Wayne. Good morning Aniket. Good morning Nivedita. Good morning Monica. Good morning Gaurav. Good morning Isha. Welcome to the class. Start. This is March 1 to 10 by March 1st part 1 ESI Finance Current Affairs. So news number 1 simple UIDAI rolls out AI-based security system for fingerprint authentication. So two-factor authentication शुरू कर दिया है UIDAI ने for artificial intelligence based security mechanism. ठीक है, for fingerprint. अब ये दो प्रोसेस क्या है? पहला है फिंगर माइन्यूटिया. दिस मीन्स ये जो आपकी फिंगरप्रिंट होती है उसके बीच में गैप्स होते हैं, गैप्स एंड ट्रफ्स एंड, ठीक है, तो होती है minutiae, finger minutiae and finger image. Both of these factors will be taken for two-factor authentication via artificial intelligence based security mechanism in UIDAI. ठीक है. Why? To check the liveliness of fingerprint. If the fingerprint is alive or not, means you are not using a dead man's fingerprint to just siphon off all his money, or using something like what we have seen in movies. Um, from glasses you are taking away fingerprint and using it to open the locker of world's safest banks. So you can't do that. उसके लिए fingerprint is alive or not, उसके लिए artificial intelligence based security mechanism that will include finger minutia and finger image. Okay, now ये advanced estimate है, second advanced estimate और revised estimate भी है ये. ठीक है, तो इंडिया जीडीपी ग्रोथ स्लोज डाउन टू 4.4 इन Q3. So this we know about it. स्लो हो गई है. आरबीआई हैज सेड दैट अगले क्वार्टर में हम सॉरी इन द नेक्स्ट क्वार्टर आल्सो वी विल ग्रो अराउंड 4.2 एटसेट्रा. ठीक, बट सिंस द एनएसओ इज कॉन्फिडेंट दैट इंडिया का जीडीपी ग्रोथ विल बी 7%, दैट मीन्स कि हम लोग जो जनवरी मार्च वाला क्वार्टर है वी आर implicitly knowing that we will grow at 5.1%. अगर ग्रो नहीं करेंगे 5.1% से, then we will not touch the 7% to overall GDP as expected by NSO. ठीक है, let's read it. Good morning, Krishna. So India's economy grew at a weaker than expected 4.4% in December quarter. Why? Due to revisions of earlier GDP. रिवीजन हुआ है 8.7% से बढ़ा के 9.1% तक गई है जीडीपी, बिकॉज रिवाइज्ड एस्टिमेट आए हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई आवर ओवरऑल इकोनॉमी हैज स्लोड डाउन. ठीक है, बिकॉज ऑफ हायर बेस इफेक्ट. बेस बड़ा हो गया तो हमारी जो ग्रोथ है वो परसेंटेज में कम दिख रही. ठीक है, 80 से 160 जा रहे हो, 100% ग्रोथ. अगर अपना बेस 100 कर दोगे, 100 से 160 जाओगे तो 60% ग्रोथ. वही चेंज हुआ है. ठीक है, ड्यू टू हायर बेस इफेक्ट. Also, manufacturing output contracted for second consecutive quarter and consumer demand also slowed down because pent-up demand is going down. Inflation ज़्यादा है, लोग ज़्यादा खर्च कर नहीं पा रहे हैं on discretionary spending. That's why consumer demand is going down. Okay, RBI also projected December quarter GDP growth at 4.4%. Now, according to second advance estimate released by NSO, remember this, nominal GDP for financial year 23 will be 272 trillion rupees. 1 trillion rupee less than last year, less than the budgeted estimate. ठीक है, assuming 15.9% growth. नॉमिनल ग्रोथ 15.9 या 16% की नॉमिनल ग्रोथ, रियल ग्रोथ नहीं. नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन इज रियल. तो रियल कितनी आएगी? 7%. ठीक है, 7% अगर रियल आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? अराउंड
8.9% का हमारा वी आर टेकिंग दैट इन्फ्लेशन कंपोनेंट, ठीक है। नाउ NSO kept financial year growth forecast at 7%, implicitly assuming 5.1% growth for the January to March quarter. Now, जो रिविजन्स हुए हैं वो देख लेते हैं। सो NSO रिवाइज्ड अपवर्ड एनुअल GDP ग्रोथ रेट फॉर 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। अब तीनों को याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रीसीडिंग ईयर देख लेते हैं। फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 GDP was revised to 9.1% from 8.7%. Also, gross value added at basic prices grew at 4.6%. ठीक है, gross value added grew at 4.6%, higher than the GDP growth of 4.4%, signaling a contraction in net indirect taxes. Why? I have told you the GVA does not contain indirect taxes, ठीक है, but GDP calculation at consumption, हम लोग GDP कैलकुलेट करते हैं at by expenditure method at market prices, ठीक है। We calculate GDP at market price and we calculate GVA at basic price. So basic price does not have indirect taxes. GDP at market prices has indirect taxes, ठीक है। GVA at basic price में जस्ट फॉर रेफरेंस इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते हैं तब आता है GDP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर GVA से कम है GDP, दिस मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स इज कॉन्ट्रैक्टिंग, इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा तभी तो GVA से कम होगा GDP, क्योंकि एक कंपोनेंट ऐड हो रहा है फिर भी GDP एट मार्केट प्राइस इज लेस देन GVA एट बेसिक प्राइस, दिस मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक। So that's why what it is written here, GVA is 4.6%, but GDP in third quarter is 4.4%, signaling that there is a contraction in net indirect taxes. Net indirect taxes. Okay. So manufacturing contracted 1.1%, services grew at 6.2%, and agriculture, very important, agriculture grew at 3.7%. ठीक है, थर्ड क्वार्टर में एग्रीकल्चर ग्रो किया है 3.7%, डाउन फ्रॉम 4.5%, बट स्टिल ग्रोइंग एट 3.7। 6.2% की ग्रोथ है सर्विस में, सर्विस हमेशा ही ग्रो करती है हमारे यहाँ। मैन्युफैक्चरिंग इज कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर 2 क्वार्टर स्ट्रेट 1.1%। एडवांस एस्टिमेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद तो थर्ड एडवांस एस्टिमेट आएगा, आई थिंक जून में आता है। आ गया तो वेल एंड गुड बिफोर एग्जाम, अगर नहीं आया देन दिस विल बी योर लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेट। Okay, now quarter 3 GDP numbers, pent up demand, household demand fizzles, shows data. So by GDP is equal to C plus I plus G plus NX की बात होगी, तो हम लोग ये तीन कंपोनेंट की बात करेंगे, कंजम्पशन, हाउसहोल्ड कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट I एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग G, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेटेज अगर GDP में किसी का है तो वो है हाउसहोल्ड, प्राइवेट हाउसहोल्ड कंजम्पशन का, दैट इज C, एंड इट इज अराउंड, इस क्वार्टर में इट वाज अराउंड 63.3% एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 60.5% फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर। यहां लिखे दो। ओके, अब ये डेटा भी वही है, NSO वाली, NSO ही रिलीज करता है सारा GDP का डेटा, जस्ट रिमेंबर दिस, कहीं भी आएगा तो NSO ही रिलीज करेगा GDP का डेटा। सो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है इन द GDP, दैट इज ऑफ हाउसहोल्ड कंजम्पशन, हाउसहोल्ड कंजम्पशन, एंड हाउसहोल्ड कंजम्पशन इज गोइंग डाउन, व्हाई, बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ज्यादा है, पीपल आर नॉट डूइंग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, उनका सारा पैसा मोस्टली उनकी नीड्स फुलफिल करने में खत्म हो जा रहा है, सो देयर इज नो पेंट अप डिमांड to be fulfilled. Okay, so that's why private spending has been slowed by fourth, 8.8% से कम होके 2.1% हो गई है प्राइवेट स्पेंडिंग ग्रोथ। 8.8% ग्रोथ थी वो कम होके हो गई है 2.1%। 63.3% in nominal GDP is the weightage of private final consumption expenditure और household consumption, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। Now, government final consumption expenditure has 9% share in nominal GDP.
अब ये 9% है फॉर Q3, ठीक है, 9% है फॉर Q3, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 10 to 10.5% फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर। अब ये अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट -0.83%, एंड इट इज अ good sign that it is decreasing. Why it is a good sign? The government is reducing its revenue expenditure. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होगा, रेवेन्यू डेफिसिट कम होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। वाई इट इज गुड? बिकॉज गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल डेवलपमेंट रादर देन डोलिंग आउट सब्सिडीज और गिविंग अवे फ्री मनी, ठीक है। सो दैट्स वाई सब्सिडी कम कर रही है गवर्नमेंट। एंड जब कोविड आया था, द गवर्नमेंट हैड टू गिव मोर सब्सिडीज, फूड सब्सिडीज बढ़ गई थी 2.72 लाख करोड़, वो भी कम हो रही है, ठीक है। वी आर कंट्रोलिंग आवर इम्पोर्ट, the crude oil subsidy, the subsidy that we have to give on petrol and diesel, that is also going down. Also on natural gas, liquid LPG gases, it is going down. So that's why government का expenditure कम हुआ है overall post COVID इस समय, ठीक है, क्योंकि कोविड में बहुत ज्यादा था, गवर्नमेंट was spending too much for let's say for giving relief to the people, direct benefit transfer बढ़े थे, subsidized grains बढ़ी थी, ये सब के लिए। But now government is spending more on capital expenditure, and we will see it in the next part, ठीक है। Now gross fixed capital formation GFCF, that means infrastructure investment was 26.8%, 26.8%, ये बढ़ के 29 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 29%। इसकी ग्रोथ कितनी है? 8.3%, लेड बाय द गवर्नमेंट। 10 लाख करोड़ अगर गवर्नमेंट कह रही है कि वी विल स्पेंड, और उसके पहले लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 7 लाख करोड़, ठीक है, देन इट मीन्स द गवर्नमेंट इज स्पीयर हेडिंग ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ओके ओके, सो फॉर होल फाइनेंशियल ईयर देख लेते हैं। 60.5% फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 10.5%, and gross fixed capital formation 29.2%. It is expected to be this, ठीक है, for whole financial year 23। ये वेटेज रहेगा। You can see that highest वेटेज जो होता है वो हमेशा हाउस होल्ड कंजम्पशन का होता ही होता है। ओके, सबसे ज्यादा खर्च करता है हाउस होल्ड। 1.4 बिलियन पीपल आर हियर, दे विल स्पेंड मोर देन द गवर्नमेंट और द कॉर्पोरेट इन एनी सेक्टर, ठीक है। नाउ एफसीआर, ये थोड़ा थ्योरी है, स्टैटिक है ये, ठीक है, बट स्टिल देख लेते हैं व्हाट इज एफसीआर। एफसीआर इज बेसिकली रेगुलेशन ही है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इफ यू आर टेकिंग फॉरेन डोनेशंस यू हैव टू हैव अ रजिस्टर्ड एनजीओ जो कि डोनेशन ले सकता है फॉरेन से। एफसीआर रजिस्टर्ड होना चाहिए, 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है। अगर गया रजिस्ट्रेशन, इफ योर रजिस्ट्रेशन इज गॉन, ठीक है, देन फॉर द नेक्स्ट 3 years यू कांट रीअप्लाई। ओके, further politicians, judges, public servants, etc. are not allowed to take foreign donations, but they can take foreign money from their close relatives, ठीक है, but they have to intimate the government if they are taking money more than 10 lakh rupees, ठीक है। बेसिक चीज आइडिया यही है इसका। लेट्स सी दिस थोड़ा डिटेल। सो सेंटर सस्पेंडेड एफसीआरए फॉर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। अब एफसीआरए है क्या? इट वाज इनेक्टेड इन 1976 इमरजेंसी बिकॉज at that time prime minister was like CI is meddling with our internal affairs, ठीक है। नाउ 2 बार अमेंडमेंट हुआ है, 2010 में हुआ, यूपीए ने किया था, 2020 2020 में किया एनडीए ने, ठीक है। सो लॉ sought to regulate foreign donation to individual and NGOs so as in a manner consistent with values of a sovereign democratic republic, ठीक है। तो amended FCRA enacted by UPA in 2010, amended again by current government in 2020 for tighter regulations we have seen. Okay, now broadly the FCRA requires every person or NGO seeking to receive foreign donation to be registered under FCRA Act, ठीक है। और FCRA Act के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं then within 90 days MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर रहता है ये, MHA should say whether they are going to give you the permission or not, 90 days,
ठीक है, टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI Delhi to utilize those funds for the purpose and only purpose for which they are raising the fund or for which they are getting the donation. ऐसा नहीं होगा you can transfer your fund from one NGO to another. आपका NGO FCRA approved है, तो you are taking funds and using that fund to fund another NGO that is not FCRA registered. You can't do that. Okay. And annual return should be filed. Okay, now Act prohibits receipts of, receipt of foreign funds by candidates for election. These basically political party candidates, journalists, judges, public servants like bureaucrats and media people are not allowed to take money or donations even under FCRA. Okay, but they can take foreign money from their close relatives up to 10 lakh without intimation. और उससे ज़्यादा लेंगे तो you have to intimate the government within 90 days. और उसके बाद भी करते हो तो 5% की पेनाल्टी लगती है. अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा है. So MHA also increased the number of compoundable offences under the Act from 7 to 12. Easy. Also exemption from intimation of government for contribution less than 10 lakh is removed. 10 लाख से कम के लिए intimate नहीं करना. ठीक है. For the money received from relatives abroad. Now, all the people who are barred, that are civil servant, bureaucrat, judges, media person, etc., if they are taking money from foreign, okay, and they fail to intimate the government within 90 days, they will not be prosecuted, but 5% penalty will be charged. Now, MHA is required to approve or reject application within 90 days. Remember the ये timeline याद रखना, 90 days के अंदर बताना है. और अकाउंट फ्रीज कर सकती है MHA if any wrongdoings they sense or they smell any wrongdoings. They can freeze your account for 180 days. You can go to court. ठीक है, कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, बट पहले हाई कोर्ट. Okay, in case of failure to process the application, the MHA is expected to inform the NGO. Now, once granted, FCRA registration valid for 5 years. And if you have to renew it within 6 months of date of expiry. The ministry also has power to suspend NGO registration for 180 days pending inquiry. ठीक है, and can freeze its fund. All orders can be challenged in High Court. High Court से नहीं रिलीफ मिला तो जाके Supreme Court. But पहले High Court. Now, and once, very important, once NGO का registration has been cancelled, not eligible for re-registration or re-application with for next 3 years. जैसे CPR का गया, if court gives a judgment in the favor of you, तब तो भाई अलग बात. But if not, then for the next 3 years you cannot get registered under FCR. Okay. Now again ये भी MHA का ही है. ठीक है. So Department of Higher Education in collaboration with Home Ministry has developed Education India Portal. Why Education India Portal? और ये कंपलसरी हो जाएगा फ्रॉम 2023-24 मीन्स कमिंग एकेडमिक ईयर. जो अब एडमिशंस होंगे उसमें ये एजुकेशन इंडिया पोर्टल पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा. There are approx 1700 higher educational institutions and which will have to register on the government portal if they wish to take foreign students. Okay. In addition to Indian Council of Cultural Relation will also use this portal and sponsor scholarship only and only through this portal. ठीक है. Now, एजुकेशन इंडिया पोर्टल में याद क्या रखना है? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे नहीं जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बिकॉज फॉरेन स्टूडेंट्स आ रहे हैं फॉर देयर सेफ्टी ओनली एंड द कॉलेजेस दैट दे आर गोइंग इन वो भी सेफ है कि नहीं, उसके लिए दोनों को रजिस्टर कराना है एजुकेशन इंडिया पोर्टल. नाउ दिस वाज द सेकंड मीटिंग जहां पे कोई जॉइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं हुआ था. दिस मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली. Okay, so External Affairs Minister or Foreign Ministers meeting ends without any joint communication. ठीक है, why? Because of Ukraine differences. India did not want to use harsh words against Russia. That's why. ठीक है, but release क्या हुआ?
G20 issued chair summary and a common outcome document for the first time. Common outcome document for the first time. Basically, it was focusing on multilateralism, and it wanted the multilateral banks like World Bank and IMF to give more financing to the underdeveloped and developing countries, basically for green financing, etc., or infrastructure development. ठीक है, let's see. Now, the common outcome document focused on the strong sentiment needed to expand multilateralism and essentiality of reforms in UN, basically reforms at Security Council. ठीक है, India wants it at Security Council, a seat at Security Council. Okay, the important principle of international development cooperation, such as host country ownership and equal partnership, should be pushed. Also, need for multilateral development banks to mobilize and provide additional funding. For this, a 11-member committee has been made with NK Singh and one other person as co-convener. Other person as co-convener कौन है for the restructuring of multilateral bank, basically World Bank and IMF? Please comment down the name. ठीक है. Now, it also stressed on the need to have reliable food, fertilizer, and energy supply chain. Basically, India wants the world to diversify their supply chain. 50% भी चाइना से उठा के इंडिया में लेते आओगे, तुम्हारा भी फायदा और हमारा तो है ही. ठीक है, that's what India wants. Okay. The need for specific initiative to boost skills mapping, and it also reiterated the need for developed economies to come together and provide the $100 billion climate finance that was promised in Paris. ठीक है, तो Paris agenda. Okay, correct, Isha. Lawrence Summers or Larry Summers, whatever you remember. Now, इसमें बस एक ही चीज याद कर रही है, because of Hindenburg fiasco, Supreme Court has formed an expert committee under Judge Abhay Manohar Sapre. Just remember this. एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, phase 1 में आएगा, phase 2 के लिए important भी नहीं है ये. Abhay Manohar Sapre will head the committee that will probe against Adani allegations. अब इसकी रिपोर्ट अगर कुछ आएगी, then that can become important, अगर कुछ उसमें से जजमेंट पास होता है तो. बट यहाँ पे बस ये इंपॉर्टेंट है कि इस कमिटी को हेड कौन कर रहा है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. ओके, नाउ रिमेंबर दिस पॉइंट. ठीक है, HUID, hallmark unique identification number, will be a 6-digit alphanumeric number code from financial year 24. 1 अप्रैल 2023 से it will be compulsory to have a BIS hallmark having 6-digit alphanumeric code, which was earlier 4-digit. 6-digit alphanumeric code compulsory हो जाएगा from April 1, 2024. Just remember this, by BIS. Why? For gold products. Okay, now Supreme Court steps in. Panel of PM, LOP means leader of opposition, and Chief Justice of India will choose CEC and EC. Important news for political system. Maybe it can be asked in phase 2 क्योंकि पार्ट है आपके कोर्स सिलेबस का. Okay, so just like the appointment of CBI director etc., यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रूल ले आए. Supreme Court has interpreted the constitution in a different way, that now for appointing election commission, currently election commission में 3 लोग बैठते हैं, वो चेंज हो सकता है. ठीक है, एक समय एक भी बैठते थे, only CEC was there. Currently there are 3 people. 1 CEC means Chief Election Commissioner and 2 election commissioners. ठीक है, for the appointment of either of them there will be a committee having CGI, Prime Minister and leader of opposition. ठीक है, and it will be mandatory. Okay. Now this judgment was passed by a bench that was presided by Justice K.M. Joseph. ठीक है, okay. And he said that if leader of opposition is not available, अब LOP क्या होता है? LOP is simple,
कि 10% ऑफ लोकसभा और एनी हाउस, ठीक है, 10% या उससे ज्यादा होनी चाहिए आपके पास सीट, कांग्रेस के पास उतनी भी नहीं है. इवन इफ यू डोंट हैव इट, then the leader of the highest seat party, that is Congress, ठीक है, leader of the highest leader of the party that is having the second highest seat, मतलब पहली तो वही होगी जो रूल कर रही है, उसके बाद जो दूसरी हाईएस्ट होगी that is Congress, उसका जो लीडर होगा that will be available as leader. In place there is no leader of opposition available. ठीक है, दो चीजें याद करनी है इसमें. फॉर द इलेक्शन ऑफ सीईसी ईसी, नाउ कमिटी विल हैव प्राइम मिनिस्टर, एलओपी ऑफ लोकसभा एंड सीजीआई. ठीक है, एंड दिस वाज हेडेड बाय जस्टिस कुरियन जोसेफ, के एम जोसेफ, जस्टिस कुरियन जोसेफ. ओके, नाउ 4 of 5 judges on the bench rejected the prayer to grant protection available to CEC and same protection to election commissioners also. ठीक है, जो प्रोटेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है, दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती. इट इज अ प्रोसीजर लेड डाउन एंड एज द प्रोसीजर इज सेम एज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, दैट यू विल हैव टू पास अ रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी. उसके पहले आपको एक नोटिस देना पड़ेगा वेयर टू द सुप्रीम कोर्ट जज और एनीवन, और इस नोटिस के लिए भी एक नोटिस देना पड़ता है पार्लियामेंट में, दैट लेट्स से एटलीस्ट 40-50 मेंबर्स आर वोटिंग. ठीक है, 40 से 50 मेंबर इसके पक्ष में हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस को ये नोटिस दिया जाए दैट ही शुड एक्सप्लेन व्हाई ही शुडंट बी इम्पीच्ड और रिमूव, नॉट इम्पीच्ड इज फॉर प्रेसिडेंट. ठीक है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है. दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इज ओनली फॉर chief election commissioner and not for election commissioner. Election commissioner can be removed by the president on advice of union council of ministers. ठीक है, now according to article 324 the CC and EC shall be appointed by the president with aid and advice of the council of ministers. But now the supreme court has reinterpreted it. अब कमेटी होगी किसकी? PM, LOP and CJI. Okay. Now Hindu rate of growth very much in use, very few सब लोग हो जाते हैं बात. So this term was given by economist Raj Krishna in 1978. Why? Because of low growth rate. Low growth rate. कितनी growth rate थी हमारी average? 3.5%. 3.5%. पर कैपिटा इनकम ओनली 1.3%. ठीक है, पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही थी 1.3%. So that's why Hindu rate of growth, low growth. Okay. Now important per capita income. Somebody asked this question also. Nirmala Sitharaman in budget has said that our per capita income is around $1,95,000. ठीक है, this is by some IMF estimate. ठीक है, 1,95,000 is by IMF estimate. But NSO जो अपना देसी वर्जन है, that the government data is here. So for financial year 23 at current prices, our per capita income is 1,72,000 and our per capita income at constant price, जिसको हम real भी बोलते हैं, real terms constant price means base. On base year, it is 98,118. ठीक है, जीडीपी का बेस ईयर 11 है, 2011-12. ओके, नाउ remember the number as per IMF in budget that the finance minister has given 1,95,000 rupees है, ये डॉलर नहीं है, इतने में अमीर नहीं हुए अभी. ठीक है, 1,95,000 rupees as per IMF and 1,72,000 rupees as per NSO for financial year 23. Remember this, and 98,000 by real term, constant term. Constant term means on the base year, excluding that inflation effect. ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है ना, नॉमिनल बाय रियल. तो उस डिफ्लेटर से डिफ्लेट कर दोगे अगर,
तो इतनी इनकम बचेगी रियल टर्म्स. Okay, not important. This is important. Can be important. So government laid down guideline for paid endorsement by social media influencers. Influencers. So basically ये बात है कि if you are doing paid promotion, you will have to write paid, ठीक है, और add such type of thing, words. ठीक है, you should be disclosing this wide and clear that this is an ad or a sponsorship. ठीक है, you should mention it clearly. अगर ये एक ऑडियो लाइक पॉडकास्ट है, वो ऑडियो है, then you will have to say it. अगर वीडियो है, okay, if you're releasing a video, then it should be in the video format as well as audio format. ठीक है, अगर वो सिर्फ एक पिक्चर है, then clearly it should be mentioned that it is a paid endorsement. ठीक है, ये सिंपल से नए नियम आए. ओके, द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, अब ये याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स issued the guidelines for influencers to disclose their material connection with the endorsing product. ठीक है, it now says that for paid and barter brand endorsement, advertisement, ad, sponsored, collaboration, partnership, ये सब कंपल्सरी होगा लिखना, और you can write paid. Also, term must be indicated as a hashtag or headline text. ठीक है, influencer market will be around 28, not important. Okay. In January, the guidelines said the individual should not endorse any product that they have not personally used. ठीक है, or in which due diligence has not been done. But is it sufficing? Because जब से IPL आया है, mostly you will see that people are endorsing financial products like many betting apps, betting kind of apps. ठीक है, so that's why implementation should be put in process more than just laying down guidelines or rules. Okay, I don't think any influencer or anyone having money, making money, is going to bet in IPL. जितना promote किया जाता है उसको. Okay. Now, the department made it clear that individuals or group with access to an audience and having the power to affect purchasing decisions should disclose their material connection, and that may be affect the weight or credibility of the representation. ठीक है, and disclosure must be clear in the endorsement message. ठीक है, disclosure must be clear in the endorsement message. Okay, in case of limited space platform like Twitter, because only 280 words, ठीक है, and hashtag, you can use like ad, sponsored or paid. ठीक है, छोटे छोटे वर्ड hashtags. Okay. In live streams and video format, both audio and video disclosure should be made. Both audio and video disclosure in case of video content should be made. In case of picture endorsement, superimpose picture so that viewers can see that it is a paid promotion picture. This Instagram I don't use, so I don't know. But if you are using a picture to promote something, then you should write a paid. That is loud and clear that people can see it. Okay, now PMLA के ऊपर जो report है, we have seen it. पहला है politically exposed persons, that are foreign experts that meddle in other countries' businesses, and second is crypto asset. So both of them has been brought under PMLA. अब PMLA के अंदर आ गया means enforcement directorate can directly probe any wrongdoing against you. अगर कंप्लेन मिली तो ठीक, और नहीं मिली तो भी suo moto they can do it. Okay, government will just call and they will do. So the central government has brought the trading of cryptocurrency within the ambit of PMLA, ठीक है, Prevention of Money Laundering Act. So any financial wrongdoing involving cryptocurrency can now be investigated by Enforcement Directorate.
एक बहुत बड़ी इशू इसमें यही होता है दैट यू विल हैव टू प्रूव दैट यू आर नॉट गिल्टी. ठीक है, द ओनर्स टू प्रूव दैट यू आर इनोसेंट इज ऑन यू, इट्स नॉट ऑन द पुलिस और द ईडी. यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट अंडर पीएमएलए. ठीक है, ईडी पकड़ती है तो फिर दिक्कत हो जाती है लोगों को. Now, the Ministry of Finance, Department of Revenue stated that activities related to trading in crypto and digital asset. अब crypto digital asset क्या है? Digital asset means cryptocurrency and NFTs, non-fungible token. Okay. So the definition of virtual asset would be same as that of Income Tax Act, that is crypto and NFTs. ठीक है. Now this will obviously this will give greater power to monitor the transfer of virtual digital asset. अब जब से यहाँ पे TDS लगा है, 30% tax लगा है on this crypto, all the companies that were working in India are virtually bankrupt or has gone to Saudi Arabia as a base. ठीक है, तो जो भी यहाँ काम ऐसा करेगा, ED can prove, but only for Indian companies they can prove fully. ठीक है, reporting entities are required to maintain KYC details of their clients and beneficial owners. ठीक है, सबको रखना होता है. Now politically exposed persons NPOs face tighter PMLA regulation. Okay, अब beneficial owners क्या है? Those who have 10% or more stake in an NGO. और इसका एग्जांपल ऐसे ले लो, जॉर्ज सोरोस, सबसे ज्यादा न्यूज में तो वही थे. ठीक है, जॉर्ज सोरोस. So beneficial ownership is an entity that has control of 10% or more. Earlier it was 25%. 1/4 होना चाहिए था. किसी के पास अगर 1/4 स्टेक है किसी फॉरेन एनजीओ में, then that person was called politically exposed person, but now only 10% is required. ठीक है. So a beneficial owner is defined as an individual who owns or controls those engaged in financial transaction with a reporting entity. ठीक है, लाइक फाइनेंशियल बैंक्स हो गए, मान लो रिपोर्टिंग एंटिटी या मान लो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक. So tightening its oversight of NPO not-for-profit organization and politically exposed person, the government has lowered the threshold for reporting beneficial ownership in an entity to 10% from 25% under Anti-Money Laundering Act. Further, it has extended due diligence requirement for these two entities. ठीक है, अब ड्यू डिलिजेंस बढ़ाया गया, मतलब द आपको पर्सन मीन्स पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन केवाईसी तो रखना ही होगा. यू विल हैव टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ द पर्सन दैट होल्ड सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन and also that are having key managerial position, that are partners or those who are beneficiaries of those entities जहां पे politically exposed person के 10% या उससे ज्यादा स्टेक लगे हुए. तो सिर्फ उस पीईपी का केवाईसी नहीं चाहिए, एवरीवन हैविंग अ की मैनेजरियल पोजीशन इन दैट एंटिटी, उस सबका ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट विल बी देयर. ठीक है. नाउ फाइनेंस मिनिस्ट्री ब्रॉट द अमेंडमेंट्स अंडर पीएमएलए 2023. ठीक है, disclosures from client as part of due diligence to be observed by reporting entities such as financial institution, banking companies or intermediaries. Now what are PEPs? PEPs are basically foreign investors, ठीक है, that are interested by with public functions by a foreign government. ठीक है, PEPs are individual interested with public functions by a foreign country to heads of state, foreign government head of state like president, prime minister or government or senior politician, etc. ठीक है. These entities are mandated to furnish information on registered office addresses and principal place of business in India. ठीक है. And also these NGO, क्योंकि NGO को तो मैंडेटरी है वो दर्पण पोर्टल, नीति आयोग का जो दर्पण पोर्टल है वहां पे रजिस्टर करना. So the ministry in the notification has also said that reporting entities were required to register clients such as NPOs on the दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग. ठीक है, मीन्स अगर कोई एंटिटी है, फॉर एग्जांपल एनपीओ है, रिपोर्टिंग एंटिटीज तो बैंक हो गई, सो एनपीओ डील करता है ना बैंक. ठीक है, एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट इज कमिंग फ्रॉम फॉरेन, लेट्स से पीईपीस, दैट विल बी कमिंग इन द बैंक. ठीक है, एंड एनपीओ विल बी डूइंग द ट्रांजैक्शन. तो बैंक शुड रजिस्टर दिस एनपीओ इन दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग विथ details of all the beneficiaries. ठीक.
नो, सिंपल. पेमेंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक गोज लाइव फॉर यूपीआई लाइट. यूपीआई लाइट क्या है? दैट यू कैन मेक पेमेंट्स अप टू 200 रुपीज, 200 रुपए तक कर सकते हो बिना किसी विदाउट एनी यूपीआई पिन. पॉइंट नंबर 2 इज यू कैन अपलोड अप टू 2000 रुपीज 2 times अ डे. ठीक है, सिंपल नो रॉकेट साइंस. 2000 रुपए एक दिन में 2 बार डाल सकते हो. ट्रांजैक्शन कर सकते हो 200 रुपए तक की एक बार में. एंड it will help to declutter your passbook, and by the end of the day you will be given a statement that how much money you have used. ठीक है, so it will act as a wallet, but this wallet can be interoperable. किसी भी यूपीआई आईडी पे चल जाएगा. फॉर एग्जांपल, a paytm wallet money you can use only at a paytm QR, but for UPI Lite wallet you can use that at any of the QR code. ठीक है, interoperability रहेगी. ठीक है, यूपीआई लाइट इज अ फीचर enabled by NPCI launched by RBI for multiple small value UPI transaction. User can carry out large number of small value UPI payments without worrying about the bank cap on UPI. ठीक है, payments in the UPI will declutter the passbook, and according to NPCI, users will receive daily transaction history of all payments as an SMS from their banks. बस एक SMS आएगा. अब पासबुक में 12-15 रुपए वाली ट्रांजेक्शन होती है, it will not be shown in the passbook of the bank. Okay, now simple news. 30 installment 16,000 crore PM किसान 2,000 रुपए हर 4. Okay, मनीष मिश्रा कंसोलिडेटेड पीआईबी मींस कंसोलिडेटेड, मतलब हिंदी क्या होता है, आई डोंट नो. कंसोलिडेटेड पीआईबी मींस फॉर 10 days जो भी आप पीआईबी पढ़ते हैं उसका एक कंपाइलेशन ऑफ पीआईबी फॉर 10 days. तो वो पढ़ लोगे तो ऑब्वियसली द सेम कंटेंट विल बी देयर. आइदर डू इट डेली और डू इट एज अ होल फॉर 10 days. तो बोथ आर सेम. Okay, now this is important. Government offers 5G test bed for free to recognize startups and MSMEs. Not for all. ठीक है, सबके लिए फ्री नहीं है. जनवरी 2024 तक सिलेक्टेड स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज के लिए फ्री है, दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैज ऑफर्ड यूजेस ऑफ 5G test bed free of cost to the registered MSMEs and startups up to 2024, so that more and more use cases can be developed. Okay, now the move will encourage the usage of test bed and development of indigenous technology in line with Atmanirbhar Bharat vision. Obviously, test bed testing बढ़ेगी तो products बढ़ेंगे तो you can increase, that's the penetration of Indian technology and Atmanirbhar Bharat or Make in India can be used. In March 2018, Department of Telecommunication approved a financial grant of 224 crore rupees. Why? To set up 5G test bed. अब तो 6G test bed भी बनने वाला है. ठीक है, 5G test bed in India, and facility will be available at nominal rate. There are 8 collaborating institutions, mostly IITs and IISc. ठीक है, the indigenous 5G test bed was dedicated to the nation by the Prime Minister in May 2022. ठीक है, अब ये 5G टेस्ट बेड बना कब था? मार्च 2018 में. अवेलेबल फॉर द पीपल और द इंडस्ट्री बाय मई 2022. कौन किया? प्राइम मिनिस्टर. इसके अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम. ओके, नाउ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आरबीआई, बट स्टिल आई विल passing cover. So IMD has said that they will start to give heat wave warning. ठीक है, हीट वेव रही नहीं है इतनी, कभी ना कभी बारिश हो जाती है 5 दिन पर. So yellow alert, heat wave yellow alert warning IMD was going to release because it was the warmest February in 122 years. ठीक है, येलो अलर्ट क्या होता है? हॉट डे दैट इज नियर बाई नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, उसके ऊपर होता है ऑरेंज अलर्ट, मीन्स आपके मैक्सिमम टेम्परेचर से 5-6 डिग्री ज्यादा.
ठीक है, 4 से 6 डिग्री तक ज्यादा। एंड देन इट इज रेड अलर्ट, दैट इज एक्सट्रीम हीट। एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम हीट मतलब more than 6 to 7 degree than your average normal maximum temperature. Not important for RBI, don't worry about it. Now government launches GSE mechanism. GSE क्या है? Grievance Appellate Committee. Why? For social media users. In case internal dispute resolution say, if the social media users are not satisfied, then they can go to GSE or Grievance Appellate Committee. तो याद करने की चीज क्या है? ये GSE relates to social media. That's it. ठीक है, बस ये याद रखना है। नाउ फार्म सेक्टर ग्रो एट 3.7%। ठीक है, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑफ 4.9%, मतलब करंट प्राइसेस पे 8.6% की ग्रोथ हुई है, नॉमिनल ग्रोथ। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑफ अराउंड 5%, रियल ग्रोथ 3.7%। ओवरऑल, ओवरऑल the GVA is expected to remain at 3.2% for agriculture, obviously. ओवरऑल मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर। नाउ विंडसर फ्रेमवर्क, तो विंडसर फ्रेमवर्क हैज बीन साइंड। ठीक है, विंडसर फ्रेमवर्क हैज बीन साइंड। अब ये साइन किसके बीच में हुआ है? बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड ब्रिटेन, नॉट ब्रिटेन, बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड यूके। ठीक है, वाई? फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स टिल नॉर्दर्न आयरलैंड, फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स टिल नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, बिकॉज अब नॉर्दर्न आयरलैंड भी पार्ट है यूके का, एंड ब्रिटेन हैज डन ब्रेक्सिट, ब्रिटेन हैज डन ब्रेक्सिट। अब ब्रेक्सिट कर लोगे, उस फ्री मार्केट रिजीम से बाहर आ जाओगे, देन यू विल हैव टू पे कस्टम। तो यूरोप से जो भी सामान आता है टू यूके, यूके चार्जेस द कस्टम ड्यूटी ऑन इट। बट यूरोपियन यूनियन हैज प्रोवाइडेड सम exemptions to northern ireland, although northern ireland is a part of european uk or united kingdom, but still EU has given some let's say leverage to this northern ireland। तो होता क्या था? since the goods of European Union used to pass to UK, UK put a customs duty। उसकी वजह से क्या होता था? नॉर्दर्न आयरलैंड में प्राइसेस बढ़ जाते थे प्रोडक्ट्स के। दैट्स व्हाई दिस न्यू फ्रेमवर्क इज हियर बिटवीन EU and UK, that any good that will pass through UK from EU and go to Northern Ireland, UK will not charge custom duty on it. Just simple. When Windsor framework between European Union and UK, and UK will not charge custom duty for the goods that are going from European Union to Northern Ireland. Simple. ये Windsor framework. Now Australia to recognize degrees from Indian colleges. ठीक है, MOU साइन हुआ है, एवरीवन नोस। नॉट द फर्स्ट MOU विद एनी वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि यूके के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है हमारा। ठीक है, पहले लास्ट ईयर। ठीक है, बट स्टिल प्रोफेशनल डिग्रीज लाइक इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिसिन, CA, ये सब जो प्रोफेशनल डिग्रीज है, दैट विल नॉट बी रिकग्नाइज्ड। आर्ट्स डिग्री, कॉमर्स डिग्री, साइंस डिग्री, ये सब जो डिग्रीज है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बैचलर डिग्रीज और मास्टर्स डिग्री, that will be recognized in Australia at similar level. Also, point number 2 here is Deakin University will set up a gift city campus. First university to set up campus in gift city, वो है Deakin University। कहाँ है? गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी क्या? IFSC है। those who will be giving exam, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मे बी। Okay, now this we have read about it, recent में भी पढ़ा हुआ है हम लोग। Let's see,
यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये नाम याद रख लेना पहली बात तो, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बाय यूरोपियन यूनियन। ठीक है, वाई इट इज विल बी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूरोप इज गोइंग टू levy taxes on the goods being imported from foreign countries having higher carbon content। तो ये शुरू कब से हो रहा है? CBAM framework will be starting from October 1, 2023 itself, मतलब इस साल से शुरू हो जाएगा ये फ्रेमवर्क। There will be a 27-month transition period, ठीक है, 27-month transition period before the taxes will be started to be levied by European Union। तो ये टैक्स कब से शुरू होंगे? January 1st, 2026 the European Union will start collecting carbon tax। This means carbon tax किसके ऊपर? स्टील, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। Why? ठीक है, and by 2034 all goods and for all goods and material। Why? तो कार्बन कंटेंट मीन्स कार्बन कंटेंट विद इन एल्यूमिनियम स्टील कम नहीं करना है। हाउ यू आर मेकिंग योर प्रोडक्ट्स, हाउ मच कार्बन यू आर एमिटिंग, दैट विल बी कैलकुलेटेड एज कार्बन कंटेंट। तो अपना कार्बन एमिशन कम रखेंगे तो टैक्सेस कम लगेंगे। दिस टैक्सेस विल बी अराउंड up to of 35%। So if you will keep your emissions in check, your carbon the tax will be lesser on you. Simple। So CBAM is by EU, just remember that it will start from October 2023 and taxes will be started from January 1, 2026। Now this GIFT City forms expert panel to evaluate application from foreign universities। ठीक है, अभी एक्सपर्ट पैनल हेडेड बाय प्रोफेसर सुधीर जैन। प्रोफेसर सुधीर जैन। 3-member expert committee for evaluation of application from foreign university। ये क्यों है? Because we have recently अभी देखा दियाकिन यूनिवर्सिटी will be setting up campus। ठीक है, but many other universities are interested to set up campus in GIFT City। So universities are how much they are, let's say, legit, that will be checked by a 3-member committee। So headed by Sudhir Jain, Professor Rajat Moona and Professor Raj Singh। Just remember the head, Professor Sudhir Jain, Director IIT Gandhinagar। ठीक है, now through International Financial Service Central Authority on February 23 notified application for setting up international branch campus or offshore education centers for IFSCA 2022। नाउ जीएसटी इनवॉइसिंग। अब जीएसटी की इनवॉइसिंग के लिए जीएसटी हैज मतलब जीएसटी हैज अलाउड प्राइवेट प्लेयर्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो 4 प्राइवेट प्लेयर्स वर सिलेक्टेड, उसमें से क्लियर और क्लियर ट्रिप अर्लियर was the first that is going to start generating e-invoices for large taxpayers। ठीक है, the 4 private companies allowed were Clear, Signet, ENY, Ernst & Young and Iris Business। ठीक है, these 4 were allowed private companies to give away GST invoice। Okay, now again dividend। So CPSE dividend crosses 50,000 crore for the second year। So revised target of dividend was 43,000 crore। अब इसके नंबर्स नए भी आ चुके हैं बिकॉज डिविडेंड इज अराउंड कितना है, अराउंड 59,000 करोड़ दे हैव अचीव फ्रॉम डिविडेंड्स। ठीक है, और 34,000 करोड़ फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो याद क्या रखना है, रिवाइज एस्टिमेट वाज 43,000 करोड़। ठीक है, जब ये रिपोर्ट लिखी गई थी 50,000 करोड़ तक आ गए थे, बट अब और ज्यादा हो गए। ठीक है, और ज्यादा हो चुका था। बाय अप्रैल यू विल सी इट विल बी अराउंड 59,000 करोड़। ठीक है, तो डिविडेंड टारगेट वी विल क्रॉस। रिवाइज एस्टिमेट कितना था, 43,000 करोड़, एंड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट रिवाइज टारगेट वाज 50,000 करोड़। ठीक है,
ओके, फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 डिविडेंड टारगेट स्टिल इज 43,000 करोड़, बट दिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट 1,000 करोड़ बढ़ा के रुक गया है 51,000 करोड़। जस्ट सिंपल सी चीज है, याद रखना, बजट से रिलेटेड है इसलिए तो याद रखना ज्यादा जरूरी है। Okay, now GST on ice cream sold over counter but not prepared on outlet to attract 18% GST. Question कहीं आया था अगर बीच seen it somewhere. Okay, sale of ice cream would drop 5% to 18% GST depending upon how it is sold. ठीक है? If you are giving ice cream in a restaurant where you are making the ice cream, तो रेस्टोरेंट में 5% इज चार्ज, ठीक है, ऑन रेस्टोरेंट 5% इज चार्ज, आइसक्रीम विल बी चार्ज ऑन 5%। बट इफ यू आर सेलिंग आइसक्रीम अक्रॉस अ काउंटर, ठीक है, आपका कोई शोरूम है या आउटलेट है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नेचुरल्स का कोई आउटलेट है, नेचुरल्स तो फिर भी अपना आइसक्रीम बनाता है, बट सर्टेन आउटलेट्स दैट गिव अवे प्री पैकेज्ड आइसक्रीम, वहां आइसक्रीम पे 18% जीएसटी लगेगा। सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, 18% फ्रॉम आइसक्रीम पार्लर, 5% फ्रॉम रेस्टोरेंट और द और एनीवेयर वेयर आइसक्रीम्स आर बीइंग मेड। ठीक है, तो वहां 5%। ओके, नाउ रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, पहले हफ्ते में बहुत अच्छी रिपोर्ट तो थी नहीं, बट स्टिल नाम तो याद होना ही चाहिए। एनुअल मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट, एनुअल मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट, तो आईईए की रिपोर्ट है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है, रिमेंबर दिस। ठीक है, मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा इससे, उससे ज्यादा बहुत डीप में क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, इफ अ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन फेज 1 तो यही आएगा, मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, आईईए। So fossil fuel companies emitted 120 million metric tons of methane. Methane is also a greenhouse gas. Methane is also a greenhouse gas and it traps heat more than carbon dioxide. ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हीट ट्रैप करता है। ठीक है, the report said that 75% of methane emissions from the energy sector can be reduced with the help of cheap and readily available technology. ठीक है, cheap and available technology, 75% of the methane emission of 75% of 120 million metric ton। ठीक है, यानी 3/4 अगर चाहे 3/4 if they want around 90 million metric ton can be solved by using cheap technology। ठीक है, and it will cost less than 3% of the total net income received by the industry। okay, now energy sector accounts for 40% of total average methane emission। मीथेन का emission फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड में से भी होता है, लाइक राइस एग्रीकल्चर फील्ड, यहाँ से भी मीथेन बहुत ज्यादा रिलीज होती है। ओके, नाउ हाउ आर मीथेन एमिशंस ड्राइविंग क्लाइमेट चेंज। बेसिक बात ये याद रखनी कि मीथेन इज आल्सो ग्रीन हाउस गैस एंड इट ट्रैप्स हीट मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, so methane is a greenhouse gas which is responsible for 30% of warming since pre-industrial time, second only to carbon dioxide, and it is a 20-year period. Methane is 80 times more potent at warming than carbon dioxide। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देर के लिए रहता है in the atmosphere, but still the potential of methane is much higher than carbon dioxide। अब IEA क्या है, सिंपल ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, OECD फ्रेमवर्क में है, UN के फ्रेमवर्क में नहीं है। क्या OECD फ्रेमवर्क established in 1974। India is not a full time member, headquarter in Paris। सिंपल, अब OECD का है तो पेरिस में हेडक्वार्टर होगा, सिंपल सा। India is not a member, full time member। You can leave this civil report। Now jobs gap ILO report। ठीक है, न्यू इंडिकेटर डेवलप्ड बाय ILO फॉर द जॉब्स गैप। ठीक है, कैप्चर्स ऑल पर्सन्स विदाउट एम्प्लॉयमेंट दैट आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ जॉब एंड इट शोज दैट women still have a much harder time finding a job than a man। ठीक है, पर्सन विदाउट एम्प्लॉयमेंट दैट आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ जॉब, ये है जॉब्स गैप का नया पैरामीटर एक तरह से। ठीक है, तो सो कॉल्ड जेंडर गैप रिवील्ड
by the GAU shows 15% of female working age would be employees in that category compared to 10.5% of their male counterpart. ठीक है. Shortfall leaves an even more exaggerated effect on wages. Women earn 51 cents for each dollar of labor income that is generated by men. ये global average है. Global average. ठीक है. अब ये बीच की बात है. हायर जैसे जैसे आप डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप डेवलपिंग में जाएंगे वो कम होता जाएगा. कि पुअर कंट्रीज में इट इज 29 cents a dollar. For every dollar a male earns, 29 cents is earned by a female. Global average is 51 cents per $1. ठीक है. Just remember this chart, these two charts. ठीक है. Want to work but cannot get a job. Women are 15%. 15% ग्लोबली women ऐसी हैं जो जॉब चाहती है और उन्हें मिल नहीं रही है, एज अगेंस्ट 10% men. Globally, developing countries like India, 25% of women want jobs, but they are unable to fetch a job. Now, pay gap, $51 is the 51 cents per dollar global average. ठीक है. High income countries 58. ठीक है. Developed countries not high, much higher, but lower middle income countries like India, यहाँ तो सबसे बुरा हाल है. 29 cents per dollar तक women are earning. Low middle income countries like India, ठीक है, जहाँ पे अराउंड $2000 per capita income, low middle income, only 29 cents. And there are many factors. Social factor भी इसका part है, सिर्फ economic factor नहीं. Social factor, social stigma is also a part of it. That women can't work more even if they want to work, and obviously the pay is really very low. Okay. नाम याद रखना, ILO की जॉब्स रिपोर्ट. Now December quarter data, public sector bank deposit up by 8.8%. ठीक है. Credit portfolio increased by 15.7%. Credit means loan portfolio 15.7%. Private sector 19.1% increase in credit sector. ठीक है. Deposit mobilization by public sector 8.8 and 13.2% by private sector. So private sector is performing better in giving loans as well as taking deposits. ठीक है. Better than public sector bank. See याद रखिए. So overall growth of loans, बैंक क्रेडिट ग्रो कितने से हुआ है? 16.8%. ये Q3 की बात हो रही है. Q3 मीन्स अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर. ठीक है. 16.8% ओवरऑल, क्योंकि 15% फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, 15.7 पब्लिक सेक्टर का, 19.1 प्राइवेट सेक्टर का, एवरेज कर दो 16.8 वेटेड एवरेज. ठीक है. ओके. ग्रोथ इन क्रेडिट लेड बाय मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स. ग्रोथ लेड बाय मेट्रोपॉलिटन सेंटर. और ये हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा है. ग्रोथ जो है क्रेडिट में मोस्टली मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स के पीपल वेयर बिजनेसेस आर मोर, their credit growth is higher rather than tier 2, tier 3, tier 4 cities. ठीक है. एग्रीगेट डिपॉजिट इंक्रीज बाय 10.3%. ठीक है. तो क्रेडिट बढ़ा अराउंड 16% से और डिपॉजिट बढ़े 10% से. अगेन अ मिसमैच. तो then again the banks have to raise funds via RBI or via any other bonds, जहां से पैसा मिल सकता है तो खाना पड़ेगा. बस इतना काफी है. ओके. हियर credit deposit ratio increased to 75, around 76%. Anything above 70% is good. Anything over 70% is good, considered good. 75.9% है और अच्छा. इन क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर क्वार्टर को अगर कंपेयर करेंगे तो इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 74%, 71% to 76% ईयर ऑन ईयर. क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्रॉम 75% इंक्रीज टू अराउंड 76%. For these states it is above 100%. No need to remember it. ठीक है. आंध्र तेलंगाना तो एक ही स्टेट है, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. Now read this one for writing. ठीक है. For descriptive, no need to discuss this. इसमें कोई बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं. ठीक है. एक दो नंबर से we will see this one. So staff, RBI staff was rotated every
15 डेज, हर 15 दिन पे रोटेशन होता था, ठीक है, सो दैट किसी को होम सिकनेस ना हो, एवरीवन कैन गो बैक टू देयर होम, एंड दिस रोटेशन वाज डन फॉर 538 डेज। जब तक वर्क फ्रॉम होम चला है, दिस रोटेशन वाज डन फॉर 538 डेज, ठीक है, सो दैट द मॉनेटरी सप्लाई इज नॉट हैम्पर्ड, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैश अक्रॉस एटीएम्स वाज मॉनिटर्ड डेली, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। Okay, now IRDI mandate general insurers to cover mental illness, HIV. So these two health policies will be mandatory. Mandatory cover होगा, पहले नहीं होता था. So कौन कौन सा cover होगा? Persons with disability, persons of HIV/AIDS and those with mental illness will be covered by general insurers, and the health insurance policy will have mandatory clause for HIV, mental illness and persons with disability. तो ये कवर होना मैंडेटरी हो जाएगा एज पर IRDI रेगुलर IRDI सर्कुलर फॉर ऑल जनरल एंड स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। नाउ अगेन ईज का मतलब enhanced action access to service enhanced access and service excellence, ease. IRDI to bring in ease for delivering entire suite of insurance services, where it was discussed at the Bima Manthan session. Bima Manthan means जहाँ पे मंथन किया जा रहा है, a session to discuss about insurance sector, okay. So IRDI said that it wants to create an environment that makes it easy for policyholder to approach the insurance company for buying service or receiving claims or for lodging any complaints or for any grievances, ठीक है। तो सिंगल विंडो पोर्टल समझ दो, ease of accessing insurance, ease of accessing insurance, ठीक है। So Bima Manthan is a very important. Bima Manthan is a bi-monthly event hosted by insurance regulator. बीमा मंथन जस्ट लाइक MPC होता है वैसे ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बीमा मंथन. Now, among other things, all stakeholders engaged in discussion reached a common consensus in prioritizing term insurance, pension, and annuity segments in life and health. Annuity means आपको रेगुलर कुछ इनकम मिलती रहेगी, ठीक है. तो टर्म इंश्योरेंस, पेंशन और एन्युटी सेगमेंट शुड बी प्रायोरिटाइज. दैट वाज द आउटकम ऑफ दिस बीमा मंथन सेशन. अब ये जो ईज वाली बात है ये अभी अंडर डिस्कशन है, ठीक है. नाउ there was a consensus on formulation of 5-year plan to expand the footprint of lead insurers in their respective. जैसे लीड बैंक्स होते हैं हर स्टेट के, वैसे ही लीड इंश्योरर्स भी होते हैं हर स्टेट के, जस्ट सिमिलर लाइक द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है. So 5-year plan should be developed so that lead insurers can have a better access and better penetration of the insurance sector. जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूरी है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया. जनधन योजना लाए, बैंक सखी लाए, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स लाए, ठीक है. इवन ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ले आए. उसी तरह फॉर इंश्योरेंस टू बी इन एवरी हाउस, ठीक है, समथिंग has to be done for insurance financial inclusion for insurance, ठीक है. Okay, now discussions have been completed for part 1 revision. क्योंकि ये मंथली डेटा है, नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मार्च कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप अप्रैल में देखोगे कि सब कुछ पूरे साल का मिल जाएगा एक साथ. नॉट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर एंड mug up all these things, don't remember. Okay, so this is it for today. हो गया रिवीजन. Part-1 of March ESI revision is complete. I hope you like the lecture and I hope it is helpful for you when we do revision. एक बार तो brush up हो ही जाता है सारा concept, but you will have to read it on your own to remember it by the time of the exam, ठीक है. So please read it. Thank you for joining everyone. I hope you like the lecture. अगर आज के लेक्चर से आपकी नॉलेज में वैल्यू एड हुआ है और हेल्प हुई है तो डू लाइक एंड शेयर एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय. Manish, I think PIB sessions will be taken by
एकता मैम। थैंक यू एवरीवन। बाय।